Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so what we are now going to discuss, I hope most of you were there in the last class. Yes, sir. Yes, fine. तो अब हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है and the things which we have done so far in the last class. Let me remind you what we have done. We basically talked about the previous year and assessment year section 3 and section 2 subsection 9, and we looked into why the previous year and assessment year they are important. और साथ में I also gave you the idea of what are the exception cases when the previous year income is taxable in the same year. इसके बारे में भी हमने बात की. अब हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, we I would like to start with the charging head of income tax, right? Charging head or charging section of income tax. Charging section of Income Tax Act 1960. Yes. So first of all, question comes to us that what exactly is this charging section? What exactly is this charging section? Yes, please, all those who are late, please remember when I start the class, thereafter I am not going to add anyone. This is the first and last, this is last time I am saying this. So please आप 1:35 से ज्वाइन कर लीजिए अगर क्लास का टाइम 1:30 है. कि मेरे लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है आप लोगों को एंट्री देना. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Now, so we are talking about the charging section of income tax 1964. Any idea what is this charging section? Which section is the charging section under Income Tax Act? बताइए. There is a section which is section 4. Section 4 is the charging section of Income Tax Act. ये तो हमें clear है कि the charging section of Income Tax Act. But the very first question is, what exactly is the charging section? Because without knowing about the charging section, I cannot start income tax. Yes, we are now starting income tax. Because we started with section 1, section 2, section 3, and a few sections, subsection of section 2. Now we are coming to section 4. सेक्शन 4 को समझने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है. देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम किसी भी एक्ट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एनी रिवेन्यू एक्ट, रिवेन्यू टैक्स एक्ट की जब भी बात करते हैं, if I talk about GST, if I talk about income tax, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है चार्जिंग सेक्शन. इन इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 4 को कहा गया है ये चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड चार्जिंग सेक्शन. Charging section in any revenue tax act, it let us know, it talks about or it states the chargeability of different type of income, chargeability or the taxability of different type of income. It means हमें इस सेक्शन चार्जिंग सेक्शन से ही पता लगता है कि इनकम पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा. It talks about the overall rules or it
empowers the entire Income Tax Act, that how the government is authorized to collect the taxes, and what are and what will be the provision to collect those taxes. So any section under any revenue tax act, sorry, specific charging section under any revenue act is very very important. इसके बिना आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि टैक्स लगाना कैसे है. What are the basis to impose the taxes, right? Section 4 in our case Income Tax Act is a charging section. यानी ये सेक्शन अगर ना हो, अगर हम किसी रेवेन्यू एक्ट से सेक्शन 4 या रिस्पेक्टिव टैक्स एक्ट से अगर चार्जिंग सेक्शन हटा दें तो आप टैक्स लगा ही नहीं सकते. उस एक्ट का सोल, हार्ट एंड सोल इज नथिंग बट चार्जिंग सेक्शन. आई एम क्लियर क्लास? समझ आया चार्जिंग सेक्शन क्या Yes, होता है? sir. Yes, sir. Very good. Now, although charging section, I need not require to discuss charging section in detail, but all I can give you summarized. Although charging section is not a very big section, it contains only 5 to 6 lines, and I'm going to read those lines from my own notes. Then I'll try to explain. जैसे मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन किसी अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को एम्पावर करता है. इट एम्पावर्स to collect the taxes, or we can say it guides how to, it answer how to collect the taxes or how to impose the taxes. Okay, as far as section 4 is concerned, it says the very first point of section 4, where any central act enacts that income tax shall be charged for any assessment year at any rate or rates, income tax at the rate of those rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provision, including provisions for the levy of additional income tax of this act in respect of the total income of the previous year of every person. थोड़ा सा difficult है समझना, but if I conclude it, if I try to explain in a simpler way, all I can say, यानी कि ये जो सेंट्रल एक्ट है, कोई भी सेंट्रल एक्ट जो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, राइट, गवर्नमेंट ने उसे that act has come into the force, has come into the light, that acts any income related to the assessment year, right? Charge for any assessment, यार इनकम प्रीवियस ईयर की चार्ज होगी असेसमेंट ईयर में, जो भी रेट होगा इनकम टैक्स का, और कोई भी लेवी, आई मीन कोई भी रेट्स जो भी किसी एक्ट के अंदर होंगे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स 1961, वो किसी भी तरह के पर्सन पर लगाया जाएगा. तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट the enactment or the power to impose a tax, which is basically in the hand of this act or in the hand of the government indirectly, right? Second point की हम बात करते हैं. Second point, what does it say? It says in respect of income chargeable under subsection 1, and जो मैंने ऊपर पढ़ा अभी, income tax shall be deducted at the source or paid in advance where it is so deductible or payable under any provision of this act. यानी नॉर्मली हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स, अभी हमने बात की ना ऊपर फर्स्ट पॉइंट में, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, असेसमेंट ईयर में होगा प्रीवियस ईयर की इनकम पे, बट सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इनकम ऑफ द सेम ईयर विल बी टैक्सेबल इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस एंड एडवांस टैक्सेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि असेसमेंट ईयर की इनकम, सॉरी प्रीवियस ईयर की इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, एंड सेकंड पॉइंट कहता है previous year की income can be taxable in the form of TDS and advance taxes. Am I clear, class? Yes. Yes. बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है. It is basically talking about the very basis of income tax act, right? तो ये हम ऑलरेडी देख भी चुके थे कि prima facie income of previous year is chargeable in the pre-assessment year, but as we all know, in the form of advanced taxes, in the form of TDS, previous year की income previous year में भी taxable होती है. ठीक. Now, section 4.
सेक्शन 4 को अगर आप समझना चाहें या इफ यू वांट टू extend its coverage or if you want to know what are the different heads of income, सेक्शन 4 उसके बारे में भी इनडायरेक्टली बात करता है. What are the different sections? Section, sorry, not section, heads of income. Right? Of income. And we all know there are 5 heads of income. Yes or no, class? There are 5 heads of income, which are the very first one is this income from salary. Income from salary. We have income from house property. Income from house property. We have profit and gain from business and profession, which is PGPP in short. We have income from capital gain, income from capital assets, basically capital gain income. That is the fourth source of income. And the fifth one is the residual, which is known as income from other sources. These are 5 heads of income. इन हम 5 heads के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिकली सेक्शन 14 के अंदर ये 5 heads को एक्सप्लेन किया गया है. So I am just letting you know these are the 5 heads of income, and we all should aware of the one very important thing. Then even जैसे मैंने बात की इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सबसेक्शन चार्जिंग सेक्शन है 4 जो बताता है किस तरह से चार्जेबिलिटी होगी. In the same way, every single head has its own चार्जिंग सेक्शन. हर एक हेड का भी अपना अपना एक चार्जिंग सेक्शन होता है, हर एक हेड का. और मेरा एम्फेसाइज हमेशा whenever I teach income tax, my emphasis is always on charging section, because if you get the charging section आपको पता लग जाएगा कि टैक्स लगाया कैसे जाएगा उस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम. इन द सेम वे वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वी विल सी चार्जिंग सेक्शन. जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी लाइक सेक्शन 28 जिसका चार्जिंग सेक्शन है, राइट. चार्जिंग सेक्शन, इसका भी हम चार्जिंग सेक्शन देखेंगे. देखिए चार्जिंग सेक्शन का मतलब आई होप हम सबको समझ आया है. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट it guides us how we can impose the taxes on a particular head of income, right. चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का सेक्शन 48 है, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन I think it's section 22, right. Section 22. Income from sale is section 15, charging section. Income from other sources को तो एक ही section है, the same section is charging section, right. So everyone has a charging section. Am I clear, class? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अभी हमने इनकम टैक्स का सेक्शन 4 देखा. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द सेक्शन 4, सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. बिना इस सेक्शन को पढ़े, बिना इस सेक्शन को समझे आप कोई भी किसी भी हेड में आप उसकी इनकम टैक्सेबिलिटी का नेचर नहीं समझ पाएंगे. दैट्स व्हाई द चार्जिंग सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. नाउ आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. यस. Yes, sir. Yes, sir. Next part. Very important question. Okay, fine. There are 78 children. I mean, 76 to be precise, excluding me and my recording presentation. Okay.
So whatever we have got, whatever we have seen so far, the question is, I hope with the given understanding, we can I can ask you a particular question, and the question is this: there's Mr. X, and he is somehow expert in tax field, in the field of taxation, Mr. X. There is Mr. Y, Mr. Y from India. Here we have Mr. X from Bangladesh. We have Mr. Z, he, Mrs. X, Mr. Z is from Australia. So there are three individuals, those who come to Mr. X, and they are asking that Mr. X, Mr. Y, he has income from India. I, Indian income. He has foreign income. He has foreign income. He has Indian income as well as foreign income. Now, they're asking whether they should, these people, Mr. Y is asking whether I should pay taxes in India or not. The same way Mrs. X is asking, who is from Bangladesh, whether she should pay taxes in India or not. There is Mr. Z who is asking, I am from Australia, I am the citizen of Australia, they are the citizen of the different countries, right? And he is having Indian income as well as foreigner income. And they all are asking whether they have any taxability, whether they have any taxable liability in India or not. क्वेश्चन ये है मिस्टर एक्स के सामने. क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. राइट, ठीक है, सबको क्लियर है? एवरीवन? Yes. sir. No सर, एक बार और बता दीजिए सर. हाँ, देखिए सीधी सी बात है, मिस्टर एक्स के सामने ये कुछ लोग आए और ये मिस्टर एक्स से पूछना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इंडिया की इनकम है, कुछ फॉरेन की इनकम है. मिसेज एक्स के पास शी इज हैविंग द इनकम ऑफ द फॉरेन इनकम ओनली, और इनके ये सिटीजनशिप है, इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर द सिटीजनशिप. मिस्टर एक्स से ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें इंडिया में टैक्स देना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 या नहीं. अब क्लियर है क्वेश्चन? Yes sir. Now, so please try to answer, especially those who can guess this. I'm sure how many of you have already done this part, but if I'm asking from those specifically जो इसको guess लगा सकते हैं क्या taxability होना चाहिए. Please try to answer. बताइए. Kiti, was she there in the class earlier? Kiti? Yes, sir. Yes, बताइए, कोशिश कीजिए. क्या मिस्टर एक्स को टैक्स देना होगा मिस्टर वाई को, या मिसेस एक्स को, या मिस्टर जेड को इंडिया में? यस, सर इंडियन इनकम पे तो लगना चाहिए. ठीक है, इंडियन इनकम पे लगना चाहिए. व्हाट अबाउट फॉरेनर इनकम, फॉरेन इनकम? सर कोई भी लगना इंडियन कमा चाहिए. रहा है फॉरेन इनकम तो वो दिखाएगा, और जो मतलब हाँ जो इंडियन कमा रहा है वो दिखाएगा फॉरेन इनकम. सर फॉरेन इनकम वाला यहाँ देगा ही क्यों वैसे? ओके, देगा ही, सही बात है. देखिए अगर मिस्टर एक्स एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपर्ट नहीं है, हमने स्टार्टेड किए अभी क्लासेस, वी जस्ट स्टार्टेड आवर क्लासेस, राइट? So Mr. X, who is the expert of income tax, he may say one thing I cannot tell. Mr. X is not in a position to tell anyone whether he should pay the taxes in India or not. Because Mr. X is asking, it does not matter. फर्क ही नहीं पड़ता भारत से हैं, बांग्लादेश से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, अमेरिका से हैं, जापान से हैं, या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, कहीं से भी हैं, राइट? It does not matter at all. The matter is the cause of concern, the thing which Mr. X need is what? रहते कहाँ पर?
कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। समझ आया क्लास? What is the Yes, sir. residential status of these individuals? If Mr. X knows the residential status, only then he will be in a position to tell them इन्हें इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना है। यानी कि हमें ये समझ आता है यहाँ से कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, बांग्लादेश की है, ऑस्ट्रेलिया की है या किसी और कंट्री की है। What does matter is the residential status. Am I clear, class? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ये चीज आपको समझना है। The very first point is this: residential status. Citizenship. In some special cases, yes, citizenship can also be looked into, but in 99.99% cases, only the residential status. और बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के बाद कुछ केसेस में हम सिटीजनशिप देख सकते हैं, बट ओवरऑल रेजिडेंशियल स्टेटस से पता लगेगा कि आपकी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होगी, या आई शुड रेदर से इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर क्लास? yes, sir. Yes, sir. So some students, they're asking for entry. They said they had an internet disconnection. Internet system. Ishita, okay. I think she left अभी क्रिकेट। आई डोंट नो आप लोगों का नेटवर्क इश्यूज इतना क्यों होता है। एनीवेज मेरा भी हो सकता है कभी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है? Why do we need to have this residential status? In our country, in Income Tax Act, Income Tax section, which is, let me see in my notes, section, yes, section 5. देखिए हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, राइट? सेक्शन 5 की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने सेक्शन 4 देखा, पहले सेक्शन 3, 2, 1, नाउ सेक्शन 5। तो कितना सिस्टमैटिक लग रहा है सब कुछ अगर हम सेक्शन से करते हैं, और यही तरीका है पढ़ाने का इनकम टैक्स। नाउ सेक्शन 5। सेक्शन 5 बेसिकली टॉक्स अबाउट द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। बेसिस, राइट? किस बेसिस पर आप इनकम टैक्स लगाते हैं, और हमें पता लगता है सेक्शन 5 बताता है हम लगाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस। रेजिडेंशियल स्टेटस, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इट डाउन, REZ, रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 5 से हमें ये पता लगता है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल वुड बी डिफरेंट, in case of HUF would be different, in case of company? अब आप पूछ सकते हैं सर कंपनी, ये तो बात समझ नहीं आ रही, कंपनी एक ही जगह रहेगी ना, कंपनी कहाँ भाग सकती है? If the company of the registration office, registered office of the company is in Delhi only, it will always remain in Delhi. तो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका हमेशा इंडिया में ही रहने वाला है। ओके, ठीक है, हो सकता है ऐसा। इन केस ऑफ फर्म, नॉट पार्टनरशिप, फर्म, आप कहेंगे सर ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होना चाहिए। द फर्म और द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द फर्म विल ऑलवेज रिमेन इन इंडिया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमेशा इंडिया में होगा, अगर बाहर है तो बाहर होगा। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, सेम केस विद दिस। इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी, LA, सेम केस विद देम। एनीवन इज लेफ्ट आउट? BOIN AOP. Body of individual, in same case with them, right? तो ये हमें समझ आता है। What does it mean? क्या रेजिडेंशियल स्टेटस, देखिए इंडिविजुअल के केस में तो समझ आता है, इफ आई एम द इंडिविजुअल आई कैन बी इन इंडिया, आई कैन बी आउटसाइड इंडिया, राइट? आई मे हैव द रेजिडेंशियल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट मेक्स सेंस।
बट कंपनी का कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाएं, फर्म का कैसे पता लगाएं, लोकल अथॉरिटी का? इट सिंपली मीन्स द नेचर ऑफ दीज पर्सन्स आर डिफरेंट. One is living being and the others are just what? Others are the forms of institutions. Not they are not the living beings. Yes, class? Yes, sir. Right. तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस is going to be different, is going to be different in different cases. यानी rules and regulation of residential status will be different in different cases. Individuals के rules अलग हैं. They have their individuals rules. उन्हें हम देखेंगे. House, sorry, Hindu undivided family. How to decide whether they are the resident of India or what is their residential status? इनके rules, HUF के rules अलग हैं. In case of company, totally different rules. And in case of them, same. Yes, class. Yes, class. Okay, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. तो यानी कि in order to decide the residential status, we have some conditions and we need to follow those conditions. There are some conditions कि अगर ये condition एक मिस्टर एक्स पूरा करेगा तो रेजिडेंशियल इंडिया का होगा नहीं होगा क्या होगा वो देखेंगे. In case of company, if the company is fulfilling those conditions, कंपनी का केस देखेंगे. फॉर्म का एजेपी, एलए, एओपी बेहोना है. It means the residential status is so important that without knowing the residential status, you cannot know the incident of taxes. वो मैं बाद में बताऊंगा. Incident of taxes. टैक्स लगेगा नहीं लगेगा. बिकॉज एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाए उसके बाद हमें पता लगेगा कि इंडिया की इनकम टैक्सेबल है या फॉरेन की या दोनों या क्या. Am I clear, class? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यार, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ चीजें? No, sir. समझ सबको आ रहा है हर किसी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपकी क्लास में बॉयज नहीं है? बिकॉज आई नेवर hear any answer from any male student. मुझे लगता है कुछ बॉयज. शीतल, was she there in the class earlier? Yes, sir. सर She उसका was there. नेटवर्क हो गया था. ठीक. बॉयज हैं आपकी क्लास में कुछ? सर थोड़े हैं. Yes, Yes, sir. कम है. अच्छा, अच्छा कम है. ओके ओके, ठीक है. तो बच्चे अगर आप कम भी हो लेकिन आपको भी पार्टिसिपेट करना है, राइट? मुझे तो अभी भी सुनाई नहीं दे रहा कोई भी. हाँ ठीक है, चलो एक सुनाई दिया मुझे. ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग भी बोल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला कुछ सीन है. ठीक है, यू ऑल्सो मे आस्क द क्वेश्चन, यू मे ऑल्सो प्लेस योर डाउट्स. तो ठीक है, ध्यान रखना. नाउ सो विदाउट नोइंग द रेसिडेंशियल स्टेटस हम ये नहीं जान सकते कि टैक्स लगेगा कैसे. सबको क्लियर है क्लास? ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm going to change the screen if you want. Yes, sir. Now next point. अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे समझा जाए. हाउ टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस. आज की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस का एक पार्ट कराया जाएगा बिकॉज from year 2021, from this year only, there has been lot of changes in residential status conditions. पहले क्या होता था, काफी सिंपल हुआ करता था लास्ट ईयर तक. जब तक मैंने लास्ट ईयर में जीएमसी तक पढ़ाया तो the procedure was very simple to understand. But as of in 2021 budget, there has been lot of changes in residential status. ठीक है, तो थोड़ा सा हमारी क्लासेस ज़्यादा लग सकती है रेसिडेंशियल स्टेटस में. बट ये ध्यान रखना, अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस समझ लिया तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स में कुछ भी कर पाएंगे. अगर नहीं समझा तो उसमें फिर मुश्किल है कि आप कुछ भी कर पाएंगे, राइट? तो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. दैट्स व्हाई आई टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस टू कंप्लीट दिस रेसिडेंशियल स्टेटस.
नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल लाइक us, we are individual human being, living beings. How to decide the residential status of individual? Yes class, ठीक है. इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस. When we talk about the residential status of individual can be of two type of resident. बताइए क्या हो सकते हैं, सोचिए, think about it. Sir, resident, non-resident. Simple. NRI. हाँ, अभी मैं कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आस्किंग यू, या तो कोई इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा. यस और नो? Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल, कोई बात ही नहीं है समझने की. भाई व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी रेजिडेंशियल यानी आप कहाँ के रहने वाले हो, या तो आप इंडिया के रहने वाले होंगे या नहीं होंगे. It simply means the residential status can be divided into two main broad categories. Resident or non-resident. अब नॉन रेजिडेंट का मतलब तो सीधा सा समझ आया, वही आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं. कुछ कंडीशंस हैं, बट इट सिंपली मींस नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया के रेजिडेंट नहीं. When it comes to resident, there are two further categories of resident. Two further categories. आप रेजिडेंट हो, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट. आप रेजिडेंट हो बट आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. Am I clear class? Yes, sir. यानी इन अ लेमन वे, आप पक्के वाले रेजिडेंट हो, आप थोड़ा कच्चे वाले रेजिडेंट हो, सिर्फ इतना सब. Now the point is this, how to know whether the person is पक्के वाला resident or कच्चे वाला resident. नॉन रेजिडेंट तो देखो सीधी सी बात है, if someone is resident, if someone is non-resident, if someone is not resident, the person will be non-resident. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Who is non-resident? The one who is not resident. जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है, सिंपल. ठीक है, तो इसका मतलब देयर आर सम कंडीशंस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस कंडीशंस टू नो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या. विदाउट नोइंग दोस कंडीशंस हमें पता ही नहीं लगेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू डिसाइड क्या पक्के वाला रेजिडेंट हो, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको. थोड़ा कच्चे वाले हो फिर भी कुछ कंडीशंस, बट कम, थोड़ा कम कंडीशंस बट करनी पड़ेंगी. यानी आपको समझ आया होगा, देयर आर सम कंडीशंस which we need to fulfill in order to be ordinary resident or non-ordinary resident, OR or NOR. Yes class? Yes, sir. Good. Very Yes, good. sir. Now these conditions. सर हाँ जी बोलिए. सर निहारिका की क्लास गलती से लीव हो गई है, उसे एंट्री चाहिए. Okay, fine. थैंक यू सर. ठीक है. अच्छा देखो, एक मैं काम करता हूँ, अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है, so what I can give you the quick access, right? ठीक है, अब आप लोग वापस ज्वाइन कर सकते हैं. Now the conditions, there are two type of conditions, right? अगर आपको ordinary resident बनना है या non ordinary resident बनना है, there are two conditions. One condition, one type of condition or the set of conditions are basic conditions. What? Basic conditions. बेसिक के बाद हम देखते हैं एडिशनल कंडीशन. एडिशनल कंडीशन. अब इन कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज कंडीशंस आप कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. यस क्लास? ठीक है. यस सर. Yes, sir. Good, very good. Now we are now looking at the conditions. First of all,
basic conditions. देखिए ये कहा गया कि दो बेसिक कंडीशंस होती है, कितनी? देयर आर टू बेसिक कंडीशंस and there are two additional conditions as well. First basic condition, it says he or she, obviously individual है तो he or she होंगे, right? It भी use कर सकते हैं in specific cases, but we are talking about the he and she, right? He or she is in India for a period of 182 days, at least 182 days in India in the relevant previous year. यानी फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या कहती है? he or she shall be in India for 180. At least 182 days. 182 days. किस साल? In relevant previous year. Yes, class? Yes, sir. Yes, sir. आप पूछ सकते हैं सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? जिस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे होते हैं उसका प्रीवियस ईयर इज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. अच्छा, आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज आवर असेसमेंट ईयर? मैंने आपको पहले भी बताया था. 2021 to 2022. Yes. 2021 to 22 is our what? Assessment year. Assessment year. Assessment year. So relevant previous year क्या होगा? 2020. 2021. 2020-21. Right? It means if we want to know the residential status of individual, तो previous year, relevant previous year यानी 2020-2021 में it means from 1st April 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो. इस क्लास Yes, sir. Yes, sir. if he is going out or he is coming in India, तो क्या वो डेज इंक्लूड होते हैं? यानी डिपार्चर का डे इंक्लूड किया जाएगा. मान लीजिए आपकी 10 बजे फ्लाइट है रात के, हम 10 बजे निकलते हैं, क्या वो दिन इंक्लूड किया जाएगा? यस. डिपार्चर डे एज वेल एज अराइवल डे. रात के 11:11 आप अराइव करते हैं इंडिया में, अब आधे घंटे ही रहे उस दिन इंडिया में. ये सुन नो, ये सुन नो, Yes. राइट? तो क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, किया जाएगा. यानी मिनट और घंटे नहीं कंसीडर, आई मीन दे डू कंसीडर, मतलब they are taken into consideration the departure day as well as arrival day, right, in this 182 day calculation. Am I clear class? सबको समझ आया? Yes. वेरी गुड. फर्स्ट बेसिक कंडीशन सबको क्लियर है भाई? पर्सन अगर 182 डे इंडिया में है या कम से कम, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है. नाउ और मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन. Listen it very carefully. He or she is in India for 60 days or more during the relevant previous year. अच्छा, 182 डे नहीं है, वो 60 days कम करके 60 days. But has been in India for 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year. समझते हैं? मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, वो 170 डेज ही रहे इंडिया में, so it means he is not fulfilling the very first basic condition class. Yes. लेकिन उनके लिए दूसरी बेसिक कंडीशन हो सकती है, which is this: he she is in India for 60 days plus साथ में 365 days in 4 immediately preceding previous year. It means he should be there in India for 60 days in relevant previous year. Yes, class?
he should be there in India for at least 60 days, at least 60 days in relevant previous year, as well as 365 days in 4 immediately preceding previous year. यानी प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में मिलाकर उनका स्टे इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए. माय क्लियर क्लास? Yes, sir. Shall I give you any example to make it more understandable? Yes, sir. ठीक है, ओके फाइन. एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा. टेक्निकल है थोड़ा, लैंग्वेज इज बिट टेक्निकल, बट एक सेकंड, नहीं इसे हटाते नहीं है. अच्छा, प्लीज लेट मी नो. आई हैव माय नेक्स्ट क्लास एट 2:30. थोड़ा लेट ना हो जाए बिकॉज आई हैव माय क्लास विद बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स. तो Okay, प्लीज sir. आप मुझे बता दीजिएगा. ओके सर. Yes, sir. देखिए, मिस्टर एक्स है, हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021-2022. अच्छा, तो मुझे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बताइए क्या होगा. 2020, 21. वेरी गुड, 2020. Right? There was a Mr. X. He was there in relevant previous year for 65 days. तो क्या मिस्टर एक्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर सकते हैं? नो सर. No, sir. This first basic condition requires he should be there in India for at least 182 days. तो ये तो कर ही नहीं रहा. Now, can he fulfill the second basic condition? वो हमें देखना पड़ेगा. Right. The second basic condition says he should be there in India for at least 60 days in relevant previous year, which he is fulfilling, right? Plus साथ में he should be there in India for 365 days in 4 preceding previous. Previous year. यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल. कितने? पहले वाले 4 साल. What does it mean? 2019, 2019, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17. 17, 18, 16, 17. इसमें he should be there in India for 365. For example, in 2019-20 he was there in 365 days. पूरे साल इंडिया में रहा, पूरे साल अपने घर से ही बाहर नहीं निकला कोविड की वजह से, तो इंडिया में ही रहा. राइट, पूरे साल इंडिया में, पूरे साल इंडिया से बाहर रहा, पूरे साल इंडिया से बाहर रहा. Is he fulfilling this second basic condition? Yes, sir. Yes, sir. He Yes, is sir. fulfilling the second basic condition, because the first part it says at least 60 days in relevant previous year, which is 65 days. वो तो कर ही रहा है. Now 365 days in 4 preceding previous year. या तो इनको मिलाकर या किसी भी एक साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता. It means Mr. X is fulfilling second basic condition. Second basic condition. Am I clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now look at this. First basic condition or second basic condition. It is or, not and. ये हमें समझना है. या तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर लो या आप सेकंड, आपकी मर्जी. इन नॉर्मल केसेस आइदर और, इसे कहा जाता है आइदर और केस. आइदर और केस. इट मींस either one or second. Yes, class? Yes, Yes, sir. But there are exception cases also. भाई इनकम टैक्स से बहुत टेक्निकल है, तो समझना भी हमें इसी वे में. यानी बाकी सबके लिए 99% लोगों के लिए या तो आप फर्स्ट कंप्लीट करो या सेकंड, कोई दिक्कत नहीं. हम आपको बेसिक कंडीशन मान लेंगे कि आपने पूरी की है. बट देयर आर एक्सेप्शन केसेस इन विच सेकंड ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा. समझ आया?
Yes, sir. What does it mean? It means only first basic condition will be given to you. Yes, class? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक स्पेशल केसेस है. I'll let you know those special cases when we do not look we do not look into the second basic condition. अगर फर्स्ट केस में पूरा हो रहा है तो मानेंगे बेसिक कर रहा है पूरा, अदरवाइज वी विल कंसीडर देम नॉन रेसिडेंट. इस क्लास Yes, sir. Yes, sir. Okay, we sir. will see those things in next class. ठीक है. I hope these basic conditions are clear to us. सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ भी आ रहा होगा अच्छे से? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी तो बहुत टेक्निकल है चीजें, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ. देखिए अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि आई एम लिटिल स्लो, आई एम नॉट स्लो एक्चुअली, दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग. एंड द सेकंड थिंग इज आई ऑलवेज वांट टू मेक श्योर दैट पीपल शुड एंजॉय द लर्निंग. दे शुड नॉट बी लाइक कि क्या हो रहा है क्लास में, इतना तेजी से सब कुछ चल रहा है. आई कैन नॉट डू दैट. ठीक है, आई वोंट डू दैट. But you will see the changes in within you when we will move our we will move to the different segment of the lectures. बट धीरे धीरे आपके क्योंकि अगर आपका बेस अभी स्ट्रांग होगा तो आगे आप बहुत इजीली कर पाएंगे चीजें. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, How many sir. of you people enjoying income tax? Are you enjoying income tax? Please raise your hands. How many of you actually? Okay, there are a lot of 30, 33, 25, 35. Okay, Nikita, she is asking charging section. Yes, I will. मैं ऐसा करूँगा, if you really want to understand charging section in detail, मैं charging section पूरा लिख कर ही समझा दूंगा. ठीक है निकिता? Okay, sir. Thank you. प्लीज दिव्या को आप रिमाइंडर दे देना. दिव्या कल भूल गई थी एंड शी मैसेज मी टुडे ओनली कि सर मैं भूल गई हूँ. कोई बात नहीं. ठीक है. So there are a lot of students those who are getting this. प्लीज you have to enjoy. आपको प्रेशर मत लो कि इनकम टैक्स ऐसा है वैसा है. ये मेरा मेरा काम है. प्रेशर लेना मेरा काम है, आपका सिर्फ क्लास में पढ़ना काम. ठीक है. डोंट टेक इट Yes, sir. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट और नॉट. हाँ डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड. डिफिकल्ट है तभी हम इतने स्टूडेंट्स क्लास में हैं. बट एट द सेम टाइम वो मेरा काम है उसको कितना इजी वे में बताना. All I require from the proper discipline and proper learning. I mean, I want every one of you in the class every single time. If I find any student who is just there in the class but who is not attending, तो देखिए अच्छी चीज़ नहीं है. आप बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं. यू मस्ट बी ऑफ 20 और 19 ऑफ योर एज. यू ऑल नो कि आपके लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अटेंडेंस तो कुछ फायदा नहीं देगी आपको. ओके. दिव्या, are you there in the class? Yes, sir. Can you take the screenshot because मेरी next class है तो बहुत time लगेगा अभी attendance लेने में. Please Yes, take sir. it. Thank you. सर हाँ रिया बोले. सर एक डाउट जो आपने प्रीवियस क्लास में बताया, सपोज कि एक बंदे की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस पे टीडीएस चार्जेबल होगा कि नहीं, मतलब कोई इंस्टीट्यूट उस पे चार्ज कर सकता है टीडीएस या फिर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है? नहीं कर सकता है. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया. I think we had one student who was asking Riva. Riva, are you there in the class? Riva, Eva, I mean. Yes, sir. Deva was asking in में. हाँ हाँ. देखिए क्या होता है, मैं आपको टीडीएस का एक छोटा सा प्रोविजन बताता हूँ इन केस ऑफ प्रोफेशनल इनकम. प्रोफेशनल इनकम का प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपकी 30,000 से ज्यादा की विद इन असेसमेंट ईयर, विद इन प्रीवियस ईयर, इफ यू हैव इनकम ऑफ मोर देन 30,000 और 30,000 रुपीज ऑफ इनकम इन असेसमेंट ईयर, तो आपको उस पर टीडीएस देना होता है 10%. ठीक है. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी इनकम 1 लाख है लेकिन आप उस पर 10,000 टीडीएस आपका कट रहा है. इट्स क्वाइट पॉसिबल. क्या होता है. ठीक है. इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. जो हाइपोथेटिकल होता है मैं साथ के साथ वो बता देता हूँ. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ठीक है. ओके फाइन. Sir, I've taken the screenshot. अच्छा